हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सा चल पड़ा है और ये ट्रेंड है मूवीज को री रिलीज करना। ऐसा नहीं है कि पहले कभी हमने मूवी को री रिलीज होते नहीं देखा, लेकिन पहले सिर्फ वो मूवीज री रिलीज होती थी जो टाइमलेस होती थी, जिन्हें हम आइकॉनिक कहते हैं। ऐसी मूवीज जिनकी ऑडियंस हर डिकेड में फिर से बनती है उसके आइकॉनिक स्टेटस के कारण, उसके रेलेवेंसी के कारण, जैसे कि मिस्टर इंडिया हो गई, मदर इंडिया, मेरा नाम जोकर, मुगले आजम, पाकीज़ा, आनंद, शोले। ये ऐसी मूवीज है जो मैं भी देखना चाहूंगी, मेरी पास्ट जनरेशन भी देखती आई है और मेरी फ्यूचर जनरेशन भी देखना चाहेगी, क्योंकि वो रेलेवेंसी फैक्टर है उसमें। लेकिन हमने कुछ नई मूवीज को भी री रिलीज होते देखा है पिछले साल। ये री रिलीज का जो एरा चल रहा है उसमें कई मूवीज तो ऐसी है जो शायद 1-2 साल पहले ही रिलीज हुई है, तो उनको री रिलीज करने का तो सेंस ही नहीं बनता। बट टॉकिंग अबाउट सेंस एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज एनीवेज, लेट्स फाइंड आउट कि ये जो नया ट्रेंड है ये क्यों बना और किन कारणों से हम इतना ओवरफ्लो देख रहे हैं पुरानी मूवीज को, नई मूवीज को फिर से री रिलीज होते हुए। लेट्स फाइंड आउट विद फिल्म कनेक्टेड। अ मेजर पार्ट ऑफ द ऑडियंस थिंक्स कि ये जो मूवी री रिलीज होनी शुरू हुई है ये इसलिए हो रही है क्योंकि वी आर मिसिंग देम आउट। बट आर वी रियली मिसिंग दोज मूवीज? क्योंकि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट हर मूवी किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल तो है ही। ऐसा नहीं है कि वी आर डाइंग टू सी द मूवी बिकॉज इट्स नॉट seen anywhere. They are there and we can watch them at our convenience from our home. And I believe कि कभी कभी ऐसी मूवीज जो आपकी दिल के बहुत करीब होती है, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, वेक अप सेट, जब वी मेट, ये ऐसी मूवीज है जो मैं शायद अपने फैमिली या दोस्तों के साथ घर पे एक कोजी एनवायरनमेंट में देखते रहना पसंद करूँगी rather than going again to the theater, क्योंकि that's a different vibe. That is what is nostalgia, कि आप घर पे बैठे हैं आपके फैमिली के साथ और आप बता रहे हैं कि why and how this movie is so close to your heart. That is what I believe is nostalgia and not re-releasing every movie in the theater. Also, ये मूवीज इतनी ओल्ड है भी नहीं कि हम इन्हें आइकॉनिक कहें या हम इन्हें टाइमलेस कहें, क्योंकि दे आर रियली जस्ट 10 to 12 years old. और 10-12 साल में अगर आप उन्हें टाइमलेस कह रहे हो तो इट इज आवर स्टूपिडिटी एंड इट इज द स्टूपिडिटी ऑफ फिल्म मेकर्स टू थिंक ऑफ ऑडियंस एज अ फूल कि दे विल फॉल इनटू दिस ट्रैप, बिकॉज आई बिलीव दिस इज जस्ट अ फिलर. दिस होल ट्रेंड ऑफ री रिलीजिंग द मूवीज इज नथिंग बट जस्ट अ फिलर, क्योंकि लास्ट 1 साल में हमने देखा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ डल टाइम. Except for a few movies, majority of the movies, even the big movies, have failed to ignite audiences' interest. ना कुछ खास स्टोरी या मूवी except for a few movies नहीं आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसके कारण उस गैप को फिल करने के लिए और थिएटर्स को रन करने के लिए हम पुरानी मूवीज को यूज कर रहे हैं टू फिल द थिएटर्स. दैट इज द होल पॉइंट एंड आई थिंक ऑडियंसेस आर नॉट फूल to not understand. I think people are understanding that very well. But there is also a plus side to this trend. That is, there are few movies which could not do as good as they could have because A, they did not have big stars in the cast, or they faced heavy competition from some big release. The movies like Tumbar or Laila Majnu, these are the movies which audiences have showered their love onto. But they could not find the audience when the movies first released in the theaters, but they found their audience in the OTT platforms. But when these movies were re-released in the theaters, their box office collection on re-release was much better than their original box office collection. So for movies like this, it's a blessing to re-release the film and find the audience for them. It's a good sign, but not for every movie. Not every movie fails because audience did not understand or audience did not go to theater. No, majority of the movies did not work in the Hindi film industry because they were not good, and this is what everyone needs to accept. There are very few movies which audience don't understand when they release,
and then they find it and then they love it. But not every movie falls under that category. Lack of good movies. This is one of the most important reason, I believe, why movies are being re-released one after another, because there is not new content out there in the market. Not good movies are being made, and that audience is able to sense. But you don't make good cinema for a longer period of time, audience stops going to the theaters, and that is exactly what has happened. I believe the industry is using the movies re-release as a tool to bring the audiences back to the theaters, but that is not how it works. Audience will come when they see a good movie. Like when Stree came, people went to the theaters. When Pathan came, people went to the theaters, right? So make good films, make it interesting enough that people want to come. A big star cast has got nothing to do with a good film. A film which is good will find its audience irrespective of what the cast is. We saw that happening with 12th Fail, right? There were no big cast was there. But Vikrant Massey found his audience. The movie was accepted, and how? So we have to do that. Lapata Ladies did wonders. You have to find it. Invest in script, not in the cast. And that is how you make a good film. In the end, I would like to say that there is a difference between a movie being a good movie and a movie being an iconic movie. For a movie to become an iconic or get the timeless status, you need to give it time which we are not giving. A movie that released 10 years ago is definitely not timeless because not enough time has passed away, right? If we watch one movie generations after generations, right? If I see my next generation watching Ye Jawani Hai Diwani or Zindagi Na Milegi Dobara, then I call it a timeless movie. I don't call it. In 10 years, you just cannot justify that statement. Also, we need to create new movies. I hope you liked the video. Whatever your views are on the topic or about my channel, kindly mention them in the comment section. Thank you for watching Film Connected. Stay connected with Film Connected. See you later.